हे गाइस, तो आज है सैटरडे। सैटरडे मतलब लॉन्ग वीडियो मतलब कुछ अलग। मतलब अलग तो नहीं है इस बार, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं लूफी की पेंटिंग विद वाटर कलर्स। मैं वाटर कलर्स करने के लिए कैमलिन का 270 GSM A4 साइज का स्केचबुक यूज़ करती हूँ, जो आइडल है मतलब मार्कर्स, चारकोल और वाटर कलर्स के लिए भी। कुकू की पेंटिंग तो मेरी फेवरेट है, और ये तांजुरी की पेंटिंग जो सैटरडे को डालने वाली थी मैं, वो खराब हो गई पूरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा डार्क हो गई। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो मेरे को पता चलता है कि कौन नया है और कौन पुराना है। सो आई विल गेट इनटू इट। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो पहले हम लूफी की आउटलाइन निकाल लेते हैं, बेसिक सी। और मैं एक रेफरेंस का यूज़ करने वाली हूँ जो पिंटरेस्ट में है। अगर वो आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। आफ्टर कंप्लीटिंग द आउटलाइन, अब पारी हम लोग की वाटर कलर की। बेसिकली मैं तो 3-4 लेयर्स करती हूँ ताकि ड्राइंग और रियलिस्टिक लगे। तो मैं स्किन कलर को बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ वाइट, रेड, ब्लू। और वैसे ही जो मीडियम वाइज डार्क करना रहेगा तो वैसे ही कलर्स में ऐड करते जाती हूँ थोड़ा डार्कर्स, ताकि शेड्स और डार्क हो। And enjoy the rest of the process, video and time lapse with some good music. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। My city's gonna tell you the tale. Everyone was left in the veil. My time won't come to an end. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around and keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting for my life. So keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting. I'm bad to the bone. Got blood on my knees. I'm bad for my life. I'm fighting. Yeah, I'm bad to the bone. Got blood on my knees. I'm bad for my life. I'm fighting. The ash keep burning down. No, you won't hear a sound. The screaming bottled within. Take a look around and keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting for my life. So keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting. And I'll be fighting for my life. So keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting for my life. So keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting. My city's gonna tell you the tale. Everyone was left in the veil. My time won't come to an end. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around, it's a war zone. The damage is already done. Take a look around and keep your guns high. It's a war zone. It's a war zone, and I'll be fighting for my life. So keep your guns high. It's a war zone.
keep burning down. No, we won't hear a sound. The screaming bottled within. Take a बट वी हैव जस्ट कंप्लीटेड आवर 500 सब्सक्राइबर और हम लोग की कम्युनिटी भी थोड़ी सी बिल्ड हो गई है, मतलब थोड़ी सी, तो थैंक्स फॉर दैट। और मैं चाहती हूँ हमारे जैसे बहुत सारे लोग जो मतलब अंडररेटेड है वो भी जुड़े इस कम्युनिटी में, ताकि 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 हम एक दूसरे को फिर से फंबल हो गई मैं, ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़े। और जैसे कि हमारे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, तो मैं चाहती हूँ शाउट आउट दूँ वो लोगों को जो लोगों ने मेरे को स्टार्टिंग से सपोर्ट किया। फर्स्ट इज़ तवाब आर्ट एंड क्राफ्ट 143 एंड सेकंड इज़ डग ड्रॉन स्वाई एंड द न्यूली जॉइंड वाईटी आर्ट्स Z4S। अगर मेरे से कोई मिस हुआ रहेगा तो सॉरी, बट दिस पीपल्स रेगुलरली कमेंट, मतलब ये लोग है ना हर रोज़ कमेंट करते हैं मेरे शॉर्ट्स पे, वीडियोस पे। सो अगर कोई मिस हुआ रहेगा तो फिर से सॉरी, बट थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट। एंड मैं चाहती हूँ ऐसी हम लोग की कम्युनिटी बड़ी हो और ये रिचुअल हम लोग हर एक माइलस्टोन्स पे हम लोग करते रहेंगे। अब आज हमारे 500 सब्सक्राइबर्स हुए तो कल हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स पे शाउट आउट देंगे। और अगर आपको ये पेंटिंग और प्रोसेस पसंद आई रहेगी तो कमेंट कर देना 1 to 10 में से, इसको रेट भी कर देना कमेंट्स में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।